Okay, good morning, 9th standard. Hope you all are safe. We have done with chapter number 4. I think half of the chapter we have completed. So, we are just going to revise the chapter again because there were a gap of 2 weeks. We are just going to revise the content which we have already done. First was the government order. In that we have I have explained you the office memorandum. That means whatever the order which is passed by the two houses, it can be called as office memorandum. It is having all such things which a circular is having. You must have seen when a circular is there in school, so it is having a serial number and everything. Everything is written in that, the date, the year, everything. So the order which is passed by the government is called as office memorandum. Generally it is having the policies for the people and the benefits for the people. So the government who is ruling, they make certain policies for the people, and when it is accepted by both the houses, it takes the form of office memorandum. So in office memorandum we have already studied that it contains a major decision policy. That was 27% of the seats vacancies in the civil post and services under the government of India are reserved for SEBC, that is socially educationally backward classes. This order was very important for the people who belong to SEBC caste. For those who are in minority, for those people don't think, so the government has passed an order for those people. That order contains that they will be having 27% of reservation in the civil post and the government jobs. The benefit of job reservation was still then available only to scheduled castes and scheduled tribes. Now the third category was formed, that is SEBC. फर्स्ट SC आपने सुना होगा, ST आपने सुना होगा. एक और कास्ट जो फॉर्म हुई थी वो थी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. वो क्लासेस जो एजुकेशन से, जो हर एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है. तो ऐसी क्लासेस के लिए सरकार ने 27% सीट रिजर्व्ड की हैं, सो दैट उनको भी सोसाइटी में कभी एलिनेशन की फीलिंग ना आए. नाउ उनके लिए जॉब्स ऑफर हुए थे. Others could not compete for these jobs. Now as you know that if certain percentage are for certain caste, so other backward classes or the other caste can't appear for that because it is already reserved for certain caste. अगर आपने देखा होगा जनरली देयर आर डिफरेंट कास्ट. ओके, अगर हमने एक कास्ट के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं तो जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते बिकॉज पर्टिकुलरली वो उसी कास्ट के लिए होता है. सो दैट इज़ ऑफिस मेमोरेंडम. आई हैव मार्क्ड एंड आई हैव गिवन द फोटोज ऑल्सो विच यू हैव टू मार्क्ड इन द book. Now the second topic which we have discussed was decision makers. That alone the decision cannot be made. There are lot many people who are under it, who decides, who formulate, who do surveys, and then the decision is formulated. So for decision makers, the main people who are under it are president, prime minister and the parliament, which consists of two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So these are the important decision makers under whom the act, the bill, the programs, the policies are being passed. So office memorandum was the culmination of a long chain of events, because whatever the government has made, it's not that everybody is happy for it. Some people are not happy with that. तो होता क्या है कि जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं पहले वो लोगों को, कुछ लोग उसको मानते नहीं हैं, एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट थिंग. तो जब ये चीज़ें ये ऑर्डर पास हुआ, दे हैव टू डू लॉट ऑफ सर्वेज. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके किसी ने बोला दैट येस वी बिलोंग टू SEBC कास्ट, वी नीड दिस जॉब, so we can't give that reservation to that person. Okay, so
इन चीज़ों के लिए बहुत सारे सर्वे हुए, बहुत सारे पूछताछ हुई, चेक, लोग घर घर जाकर उन्होंने चेक किया दैट हु बिलोंग्स टू दिस कास्ट, दे हैव टू गिव द प्रूफ ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें हुई जब ये ऑर्डर पास हुआ। सो इट वॉज टेकन अंडर द लीडर कॉल्ड बीपी मंडल। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम में जो ऑर्डर पास हुआ था वो बीपी मंडल ने हेड किया था, और तभी इस ऑर्डर को हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 marks. Okay. So now he has said that we have to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India. Now we cannot say that yes, this person belongs to this caste. So they have maintained certain criteria through which a person has to pass through. They have to, आपने मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम में जब वो लोग एडमिशन करवाने वाले होते अपनी बेटी का आरटी में, है ना, राइट टू एजुकेशन में, तो आपने देखा होगा कि एक स्कूल के एक टीचर आते हैं और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही दे कैन से दैट दिस पर्सन बिलोंग टू आरटी और नॉट। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक चीज़ जब भी होती है तो उसका सर्विस होता ही है, क्राइटेरिया होता ही है जिससे कि हम पता कर सके। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर विच अ पर्सन हैज़ टू गो थ्रू, देन ओनली ही कैन बी कॉल्ड एज SCBC एंड देन ओनली ही कैन गेट ऑल दीज बेनिफिट्स विच अ गवर्नमेंट हैज़ मेड फॉर SCBC क्लासेस। नाउ जब ये रिपोर्ट का पूरा सर्वे वगैरह हो गया, देन इट वॉज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ना पार्लियामेंट में आपने देखा होगा दोनों हाउसेस को एग्री होना ज़रूरी है, तभी वो बिल पास होता है। सो नाउ फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन। ना आपने देखा होगा जो पार्टी रूल कर रही है, ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन अगर रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि ये चीज़ें अडॉप्ट हों और अपोजिशन पार्टी चाहती है कि ये चीज़ें हों, तो हम लोग वोट किसको देंगे? उसको देंगे जो हमारे लिए हमारे हित का सोच रहा है, द पीपल हु इज़ थिंकिंग फॉर अस। सो द पीपल स्टार्टेड गिविंग वोट टू दोज पीपल हु वॉज praising this Mandal Commission. So in the Lok Sabha election that was held in 1989, underline the year also. So the Lok Sabha election was held in 1989. The manifesto of Janata Dal promised that if we vote and if we get into power, then we are going to implement this SEBC, the office memorandum. So we can say that when the Janata Party has win the elections, the leader was VP Singh. Please underline this also. VP Singh became the prime minister, and then he has put the Mandal Commission in the parliament, where the discussions was there that it should be implemented or not. So the main, I told you that who were the decision makers: the president, the prime minister and the parliament. So the president, what he has done, the president of India in his address to the parliament announced the intention of the government. Now they have said that the government who is ruling, the government who has win the election, they just want to discuss this office memorandum in the parliament, that is it beneficial for the people to implement this for the people. So he has said that yes, this Mandal Commission to be discussed in the parliament. So on 6th August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. Now the next year, that 1989 में elections हुए थे और 1990 में इसको बोला गया था yes, it will implement. The next day, Prime Minister informed the Parliament about the discussions. Now आपने देखा होगा जब भी Parliament बैठता है, हाउसेस बैठते हैं, तो उनमें एक डिस्कशन का टॉपिक होता है जिस पे वो डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट में जो फर्स्ट डिस्कशन था वो था मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करना है या फिर नहीं, उसका डिस्कशन। प्रेसिडेंट का फर्स्ट रूल पढ़ लिया हमने, क्या उसने अनाउंस कर दिया कि यस, पार्लियामेंट में जो फर्स्ट चीज़ें वो डिस्कस होंगी वो गवर्नमेंट जिन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का काम था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यस, पार्लियामेंट में ये चीज़ें डिस्कस होंगी दोनों हाउसेस में, सो दैट वी शुड गेट द एग्रीमेंट ऑफ बोथ द हाउसेस, क्योंकि एक भी हाउस अगर एग्री नहीं करती तो वो बिल पास नहीं होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया कि यस, दोनों हाउसेस में ये चीज़ें डिस्कस होगी। नाउ अब आती है पार्लियामेंट की बात। पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हुआ तो आप देखेंगे
जब हाउसेज में डिस्कस हुआ तो बोथ द हाउसेज दे सेड कि यस इट इज़ ओके, दे वर एग्री टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम। जब ये पास हुआ और लोगों तक इम्प्लीमेंट हुआ तो लोगों में क्या हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो गया। न्यूज़पेपर मैगजीन्स वॉज फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशूज़, बिकॉज द पीपल who belong to a general caste or the people who belong to different caste, they thought कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। They most of the jobs are preferred to these castes and very less reservation are for us, we are the sufferers। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू हो गए, बहुत सारे मतलब somewhere it has taken a violent form also। So to settle all these things, they thought ki why the reservation for these castes, why not reservation for our caste, why every benefits are for the scheduled caste, scheduled tribes and the other caste, why the benefits are not given to us। the people होता है ना कि जैसे आपने क्लास में भी देखा होगा, अगर कोई टीचर बार बार एक ही बच्चे को काम दे रही है तो कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि मैम हमको क्यों नहीं दे रही, वाई शी इज़ नॉट गिविंग वर्क टू अस, हम वीक हैं इसीलिए, मतलब होते हैं क्वेश्चंस उठते हैं। तो उसी तरीके से बाकी जितनी भी जो पूरी इंडिया है जिनको बेनिफिट मिल रहा था दे वर हैप्पी, एंड जिनको नहीं मिल रहा था दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि यस व्हाई द बेनिफिट आर नॉट गिविंग टू अस, व्हाई all the things are for them। So to settle all these disputes, I have earlier explained you also that जब भी कभी भी लड़ाइयाँ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम टू सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई एंड ही वॉज देयर टू सेटल द डिस्प्यूट्स। So Supreme Court was there to settle the disputes. So there were lot of cases which were filed among different states। हर एक स्टेट से बहुत सारी फाइल्स आई थी इसके खिलाफ कि ये बंद होना चाहिए। So what Supreme Court has done, तो Supreme Court has said that you have to bunch all the cases and then you have to submit me। Now उन्होंने बोला इतनी सारी केस हम इंडिविजुअली नहीं रीड करेंगे, आप सारी केसेस को बंच करें कौन कौन से इश्यूज़ पे हैं और फिर हमको पास ऑन करें, then we are going to decide, then we are going to read the case। and this case was also called as Indra Swane or others Union of India case। Please underline this for MCQ fill-ups or true and false, that the protest, the people which have filed cases for this Mandal Commission, this was also called as Indra Swane or the Union of India case। So 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both the sides। By majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that the order of the government of India was valid, but they have to do certain kind of changes in this। So in 1979, it was headed by BP Mandal। In 1989, when Lok Sabha election was done, VP Singh has taken initiative to put this Mandal Commission in the Parliament। In 1990, it was agreed by both the houses, and in 1992, by Supreme Court, it was declared as a valid point। Now, but Supreme Court has said that you have to do certain changes or you have to modify in this rule so that there should no disputes among the people। and after making certain changes in this, everybody was agreed to this। So office memorandum on 8 September 1993 was accepted by the people and all the disputes were end। So we have covered 2 topics and I just want that you should read page number 57, 58 and 59. Okay, thank you class।